Assalamu alaikum, everybody. Welcome to another wonderful uh, live stream, and we're here at Sophis Productions, and we're live. But I have to do a few things to check up if we're all good. दूसरे नंबर पे भी कर दे stream का link send. So sorry for the disruptions. We just need a second. Copy. Hope you guys are having a wonderful day. And we're having a wonderful day over here. We're here streaming live from Lahore. And there's some technical difficulties that we're having. We'll just get it. We'll be starting the live stream in just a bit. उसकी तस्वीर क्यों नहीं आ रही? एक सेकंड दोबारा से मैं करता हूँ. मगर इसकी तस्वीर क्यों नहीं आ रही? Yes, finally. कमेंट आया कोई? कौन कह रहा है कमेंट हमें? Guys, we're just starting the live stream. I am forwarding the link to the live stream to a few people so everybody knows that we're live. And all right. So, Adnan.
Yeah. All right. So Dante is saying Mr. Wali is on, and Daniel is saying, okay, hurry up and send. So yeah, thank you. I think there are 5 people who are already watching our stream. We're live here at Sophis Productions, and today आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने आए हैं. अपेरेंटली पाकिस्तान के अंदर सरगोदा एयरबेस के पास मोदी जी ने सीधा अटैक किया है, आतंकियों को मार दिया है. और इस अटैक के दौरान मोदी जी को ये नहीं पता था कि हमारी न्यूक्लियर बेस वहाँ है सरगोदा एयरपोर्ट के पास. रूमर्स आर गोइंग ऑन टुडे दैट उस एयरबेस के अंदर से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रही है, और वो ना सिर्फ लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद को उसने तबाह कर दिया है, मगर अब वो भारत में भी घुस गई है. तो दिस इज़ अ बिग कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन, I mean, in the past day or two. So today's special podcast live stream is to tell everybody the lies and the deceptions that are happening. So let's start with a lighter note. I want to play some memes to start the live stream. And do we have the... All right. So let's listen to some good memes. हेलो चोरी ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਚੱਲ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀਏ. ਉਹ ਯਾਰ ਫੜਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪਾਇਲਟ ਬੀਬੀ ਏ ਕੋਈ. 2 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ. ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, शादी ਸੀ. पाकिस्तान ले आया तू लड़. आ गई पाकिस्तान में शिवानगी. हैं? ये क्या हो गया? माशाल्लाह, कितना खूबसूरत नजारा है. ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਅਭਿਨੰਦਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈਏ ਜਾਂ ਗਊਮੂत्र. 10 मई की रात को पाकिस्तानी वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग कर भारतीय सेना के साथ पूरी रात यमन कतीता किया. भारतीय वायुसेना की एक पायलट विंग कमांडर शिवांगी को पाकिस्तान ने कैप्चर किया है. सही पकड़े हैं. I hope Pakistan extends the same warm hospitality to Shivangi as they did to Abhinandan. The tea is fantastic. आ गई पाकिस्तान में शिवानगी. शिवानगी का खराब हो गया रफेल त्यारे का स्प्रिंग. क्या बात कर रहे हैं? मांग रही है स्ट्रिंग. ये ले जी. कैसी लगी स्ट्रिंग? The sting is fantastic, thank you. गजब बेइज्जती है. वालो sting. ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਫੜੀ ਏ, ਸੰਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੇ. ਅੱਛਾ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਨਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਸਿਰਫ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ. ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀਓ. देख लो यार, पाकिस्तान ने जो इंडिया की लेडी पायलट पकड़ी है, उसके बदले में इंडिया ने भी पाकिस्तान का एक बहुत ही ज्यादा काबिल पायलट पकड़ लिया है. अच्छा, जिसकी पिक्चर भी मैं भी आपसे शेयर करता हूँ. और बताया जा रहा है कि ये अकेला एक पायलट 10 पायलट्स के बराबर था. हमारे मुल्क को इस जैसे जवानों की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्या बात है सर. बाकी आप दुआ करो अल्लाह से कि हमारे जवानों को अल्लाह ताला महफूज रखे. अरे कहना क्या चाहते हो? और ये है वो पायलट जिसको इंडिया ने पकड़ लिया है. So guys, yeah, as you all were watching, that was too much. शिवांगी जो है इंडियन पायलट, वो पाकिस्तान के पास है, and Pakistanis are so excited. We heard कि श्री देवी की जो बेटी है ना, जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही शिवांगी भी खूबसूरत है. और पाकिस्तान के मर्द शिवांगी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए. So that's the story that's been going on. I hope and yes, we will read anyone's comment. DJ Shahrukh just said yo to DJ Shahrukh as well. He was just here and he just left our studio. And koi bhi banda, you're welcome to comment on our live stream and we will
read the comments out loud. So today we're going to talk about जो कि recently अभी एक बहुत बड़ा ये एक इशू बना हुआ है, और मोदी जी and all these गोदी मीडिया is saying that पाकिस्तान का सरगोदा बेस पे जब इंडिया ने अटैक किया तो शहबाज शरीफ दौड़ता दौड़ता गया ट्रंप के पास, एंड शहबाज शरीफ said कि the site that you hit was a nuclear site, और वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होना शुरू हो गई है. और बिल्कुल बेसलेस क्लेम्स, मतलब कि कोई आपके पास कोई रिसर्च हो इस सारी चीज़ के पीछे, कोई आपके पास लाइव फुटेज हो, कोई आप देख रहे हैं कि सरगोदा में लोग भागते फिर रहे हैं, किसी एविडेंस के बगैर. आई थिंक क्योंकि मोदी जी बहुत बुरी तरह हारे हैं ये जंग, और मोदी जी एक कुछ उनको जीतने के लिए चाहिए, कुछ उनको विक्ट्री चाहिए, मगर मोदी जी को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि मुश्किल लग रहा है ये सारा काम. सो लेट मी ओपन अप a few more videos to start up the live stream. और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज की बहुत ही So as usual, हमारे देश के हर जवान को रखिए और उनको सलाम कीजिए कि वो इस तरह से रात के इस अंधेरे में जन्मदिन मनाने गए थे. आप केक कट गया पाकिस्तान का. यहाँ पर चैतन्य मेरा बच्चा बड़ा खुश है कि आज उसके जन्मदिन के दिन आतिशबाजी हो रही है, और देखिए आतिशबाजी ऐसी हो रही है कि पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाई जा रही है. देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथियों. बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को हड़काया है. तुरंत पीछे हटो. बहुत बुरी तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि तुरंत ये सब रोको, तुरंत पीछे हटो. अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया है. तो अभी आपने एक खबर बताई थी कि मार्को रूबियो से बात हुई है. मार्को रूबियो ने फौरन बोला है क्या कर रहा हो, बहुत बुरी तरह पिटोगे, नामो निशान मिट जाएगा, फौरन पीछे हटो. ये बहुत बड़ी खबर. अमेरिका पहले भी कह रहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये उसका हक है, हिलना मत, कुछ करना मत. लेकिन पाकिस्तान ने गलती की. एक बार फिर अमेरिका समझा रहा है पीछे हट जाओ, हाल बुरा होगा. लेकिन अब पता नहीं समझ में आता है. गौरव आर्या, जब तक मार्को रूबियो का फोन जाएगा, वो कह रहे हैं कि तुम पीछे हटो, तब तक तो भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है. लाहौर पर अटैक कर दिया, और अगर अमेरिका को फोन करवाना था तो आईएमएफ से करवाना था. गलत कर दिया खुद फोन करके. आईएमएफ से फोन करिए, फट से पीछे हटेंगे. और बहुत बढ़िया करा. देरी हुई है, इसमें बचे कुछ ड्रोन भी पाकिस्तान क्या उड़ा देंगे. और नहीं, So the point of showing this video is that this video aged really well. 2-3 पॉइंट कर्नल गौरव उठा रहा है. फर्स्ट ही सेइंग कि अमेरिका को ना कॉल करो, आईएमएफ को कॉल करो. राइट स्मैक इन द मिडल ऑफ द वॉर पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन मिला. एक ऐसी वैसे जंग है पाकिस्तान इंडिया की है कि दोनों साइडों को बड़े फ़ायदे हुए हैं. चाइना को बड़ा फ़ायदा हुआ है. चाइना इज़ द बिगेस्ट विनर. बट पाकिस्तान को आईएमएफ का $1 बिलियन का लोन राइट अवे मिला सीज़ फायर करने पे. और कर्नल गौरव ने लाहौर को डिस्ट्रॉय कर दिया था. लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ कुछ चिड़िया भी पर मारे ना तो लोगों को समझ आ जाती कि कुछ हुआ है. तो कर्नल गौरव ने पूरा का पूरा लाहौर निस्तो नाबूद. एंड व्हाट ही सेइंग इज़ के मोदी जी जो है वो इंटरनेशनली भी काफ़ी जो है ना आइसोलेट होते जा रहे हैं. व्हाई इज़ इट सो? व्हाई इज़ एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग these days? I mean कि what is India going to do next? ये कल भी हमारा स्ट्रीम करने का, यही लाइव स्ट्रीम करने का था कि we think कि India is now trying to plan an attack, because India भी जो है एक बहुत बड़ा टेररिज्म का नेट और नेटवर्क बना के बैठा हुआ है. तो ऑलरेडी अगर वो रूमर्स के थ्रू नहीं जीत पा रहे, अगर उनको ये लग रहा है कि हम लोग न्यूक्लियर की वजह से जो है एक रूमर फैला देंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया या न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गई, और उस तरह हमें कोई पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी, वहाँ से भी मोदी जी को कुछ नहीं मिल रहा. इवन दो
कि अब इंडिपेंडेंटली सारे न्यूज़पेपर्स, इवन कि फ्रांस, हाउ अमेजिंग इज़ दैट कि फ्रांस ने खुद एडमिट कर लिया है कि हमारे राफेल तैयारों के अंदर कोई मसला नहीं था, ये मोदी जी की एयरफोर्स में मसला था. एंड इंडोनेशिया आई थिंक $34 बिलियन के जहाज़ राफेल तैयारे ले रहा था. एंड व्हेन दिस वॉर हैपन नाउ, the President Macron is visiting Indonesia, explaining कि भाईजान ये तैयारे सही हैं राफेल and they're absolutely too expensive. I wanna show एक और बड़ी important वीडियो गाइस. राफेल को जब इन लोगों ने लॉन्च किया है, कोकोनट, सो फिजान कैन यू सेंड मी, वो एक वीडियो है जिसके अंदर इनको ना राफेल को इनाग्रेट कर रहे हैं और वो कोकोनट जो है ना उसके आगे राफेल के रखा हुआ है. वो वाली वीडियो मुझे निकाल के भेज. इनकी एक बड़ी मज़े की वीडियो आई है कि राफेल तैयारा जब इंडिया के अंदर लैंड हुआ है तो वो उसके ऊपर कोकोनट डाल उसके जो है ना टायर के नीचे रखा हुआ है, वो तोड़े हैं. अच्छा, so let's go to a few comments as well. First country to get IMF loan while being at war is a history itself. Yes, Dante, that's very correct. You're right. That Pakistan is like Donald Trump, JD Vance, ये जो सारा हुआ है ना, ये पाकिस्तान के फेवर में चीज़ें जा रही हैं. I mean, कश्मीर का मसला अब इतना इंटरनेशनलाइज हो गया है. ट्रम्प इज़ सेइंग हिमसेल्फ के 1947 से ये मसला जो कश्मीर का, पाकिस्तान इंडिया का है, अब वो मैं खुद हल करूँगा. डोनाल्ड ट्रम्प को पीस प्राइज़ चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि हमें सुनने में आया है कि मिस्टर ओबामा जब प्रेसिडेंसी में आए तो वो बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीत के आए और बड़ा उसको मसले मसाइल हुए, तो ओबामा को उन्होंने पीस प्राइज़ दिया. हालांकि हम सब जानते हैं कि ओबामा ने कितनी जंगें कराई. सीरिया तबाह हो गया, लिबिया तबाह हो गया. पाकिस्तान में ओबामा के टाइम पे जितने ड्रोन अटैक्स हुए, दैट इज़ अनफ्रीकिंग इमेजिनेबल. And now that we see कि डोनाल्ड ट्रम्प बार बार इस चीज़ से फैसिनेट, उसको एक चीज़ चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़. और ट्रम्प अपने नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे मोदी को उसने लिटा दिया सड़क पे लिटा दिया मोदी को. मोदी जी ट्रम्प को आंखें दिखा रहे हैं कि भाईजान मैं भी जो हूँ इधर ही हूँ, इस दुनिया में हूँ. So let's go to the next comment. Asma Munir is saying, Wali Wonders को लाइव देखकर लगता है सब कुछ पॉसिबल है. Keep shining. Thank you, Asma, for such a great and wonderful comment. We wish you all the best. And today we're not getting that much live people in our section. Is जंग ख़त्म हो गई है भाईजान? जंग जो है वो आज कोई मुझे ख़ास मैं भी इतना एक्साइटेड नहीं रहा इस जंग के बारे में. एनर्जी लेवल आज डाउन है या हिंदुस्तान को भी अब समझ आ गया है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग ख़त्म हो चुकी हुई है और पाकिस्तान जीत चुका हुआ है. सो लेट्स गो टू सम ऑफ द कंटेंट दैट वी वर सर्चिंग. So, this is a nice chart of the India-Pakistan conflict statistics. So, how many jets did India lose? 6 jets. How many air bases were targeted by Pakistan? Almost 11. How many drones from the Indian side were lost? Almost 553.
And I mean, if you see the comparison, you might be seeing it on the screen. You can easily see that the war के अंदर ना जो दोनों side पे what can you say कि losses किसके ज़्यादा हैं, and we can see कि 5x 10x जो है ना इंडिया के losses ज़्यादा हैं. So that's another thing as well. अच्छा, and what else? Achha, Dante, let's go to a comment. And Dante, what is Dante saying? Let me just quickly. So yeah, Dante is saying, India के पास रह क्या गया है, हमारे बारे में पूरी दुनिया को इनकी बजा रही. Yes, इंडिया के पास कुछ भी नहीं, शक्ल दिखाने के लिए नहीं रह गई. मोदी जी जो है वो डिसअपॉइंट हो गए हैं. और let's go to some videos while there's some more people that are joining our live stream. So we'll what's up? So we'll play a meme or two to get in the mode and to get more questions and answers. Of course, guys, whoever is watching, please, guys can comment and we'll read out the comments out loud and आपको हर comment का जवाब देंगे. And let's play a few videos and then let's continue our live stream. जंग हुंदी ठीक है, पहले ते अमन, अगर तुसी नहीं बाज आने फिर हुंदी जंग. मौत हुंदी, साडी मौत हुई शहीद, डायरेक्ट किथे जा रहे जन्नत. ओए होए 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 की लब रहा वो भी सुन ला. पूरा ओए होए 70 यार मेवे महल. अच्छा हुण तू अपना सुन, तू मरिया पहले तेनू तेरिया नहीं साड़िया, फिर तू पता किते जा रहा सड़ के, ता क़यामत सड़न वास्ते दोज़ख. यार तू मर के भी दोज़ख चल हैं, ये क्या हो गया? जलीलो ख्वार मरदा रहेगा, सड़दा रहेगा, सड़ 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 सड़ेगा, तू फिर सड़ेगा. हाँ तो यार बहुत लोग पूछ रहे थे कि जंग के बाद करेंसी कौन सी चलेगी, तो मेरे भाई ये करेंसी जंग के बाद चलेगी. घबराहट में पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया. भाई इनकी कौन से जंग लड़ बैठे ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ. ਨੋ 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 ਨੋ. ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਈ ਤੇ ਡਰਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ. ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਦੇਖਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੰਬ ਵੇਖਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ. मोदी सवेरे सवेरे पटाखे की चासाई थी, छुट्टे तो नहीं थे क्या मैं तो और भेजूं. शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे. अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल. जिन्नी देर नूं फौज पहुंचदी सी उत्थे सिर्फ धुआं ही लब्भा वा, बाकी हर शै कबाड़ी च लै गए. मोदी तेरी मैं कीती भैन मोदी, तू गलत जगह पंगा लै बैठा. पाकिस्तान ते इंडिया दी अगर जंग लगी ना, अच्छा तो मैं उस जंग वाली जाते वन के ते पकोड़े समोसे ते नाल कमांदा दा जूस ला खलोसा. So we just saw पाकिस्तानी लोगों को जंग की जो है ना कोई टेंशन नहीं है. हमारे लोग जो है वो बॉम्ब्स के पास जाके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. वो बॉम्ब जो है वो कंधे के ऊपर लाद के और ड्रोन जो है चले घर. हमारे पास आज स्टूडियो में लाला भी आए हुए हैं. लाला हमारे बड़े अच्छे जो है, और लाला जी गए हुए थे बॉर्डर के पास और ये सबके इनके सामने ही वाघा बॉर्डर के पास, एंड लाला जी ने ड्रोन्स देखे हैं वहाँ से उड़ते हुए. वैसे तो हमें लगता है कि इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ ड्रोन उड़ते रहते हैं, मगर इस दफ़ा जो ड्रोन उड़े हैं तो पूरी जो प्रॉपर
एक मोहल्ले के अंदर लोग इकट्ठे हो के तो ड्रोनों को अट्रैक्ट किए. ऐसे नहीं मोदी जी, ऐसे नहीं हम आपके ड्रोन अंदर आने देंगे. So Dante is saying even Trump has said Tim Cook to seriously reconsider about the Apple plant being there. Yeah, that's the news going on. And yes, today आज हम अपनी पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं क्योंकि देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़. ट्रंप को $400 मिलियन का जेट मिल गया और ट्रंप को एक पूरे फाइटर जेट के 12 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है कतर से. और ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के साथ डीलें साइन कर ली हैं, बहुत बड़ी बड़ी सुनने में आ रहा है. तो इंडिया को इसलिए सपोर्ट थी क्योंकि इंडिया कुड हैव स्टूड अप अगेंस्ट द ग्रेट चाइना. बट व्हाट हैपन्स, मोदी जी makes a big disaster. Everything was going fine till Modi ji announced about the war. And since the war, China के जो fighter jets हैं, China के जो missiles हैं, they're a fraction of the cost. And what happens is they destroy the whole of Indian military air force infrastructure. Such a brutal response. And what is India के पास क्या है? मोदी जी आप इतनी बढ़ के क्यों मारते हैं अपने S-400? बस सिर्फ S-400 है आपके पास और कुछ भी नहीं है क्या? तो S-400 सिस्टम रशियंस ने दिया था और इंडिया ने ऐसे प्रिटेंड किया कि हमारे पास तो ओए होए. मगर व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ इज़ दैट S-400 जो है ना चाइना की टेक्नोलॉजी के आगे फुस. कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हम लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना के S-400 बैटरीज़ के ऊपर लादे हैं और S-400 बैटरीज़ हाइपरसोनिक मिसाइल्स को नहीं रोक सकती. बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी अगर मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आपका S-400 सिस्टम, वो भी जो आपके पास सिर्फ 3 हैं, 5 आपको प्रॉमिस किए गए थे मगर आपको मिले सिर्फ 3. तो So Asma Munir is saying पाकिस्तान की खामोशी को कमज़ोरी समझने को हर बार हमने सरप्राइज़ दिया है. So yes, Fazan is also sending me some news. Let me open up some news as well for you guys. अच्छा, all right, maybe we can't see that news cause anyways it's some article. So anyways yeah, right now I'm getting the articles. Let's see the videos. Might take like a minute to load. Anyways, let's wait for the videos to load and then we'll watch them. So Trump ji ne, what I was telling हिंदुस्तान का तो यार है, गद्दार है. देखिए आज पाकिस्तान की शिकस्त और भारत की सेना की हार. That was a video that we saw. Let's watch another one. Yes, this is our proud moment. हमारे PAF के नौजवान को हम लोग वैसे we salute them and they did a brilliant job fighting the Indian pilots. And जहाज़ तो जहाज़ है, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, but you really have to give it up to these people, these guys who really did something phenomenal. The fact that Pakistan ने रिकॉर्ड बनाया
from 183 kilometers away, these guys shot down an Indian Rafale jet, and that is unheard of. Even if you see like the last record that was set by the Ukrainian and the Russian army, and that was such a big record, about 130 kilometers, and these guys absolutely went like above and beyond, like 50 kilometers, 60 kilometers, more than that. That is a lot of distance in a real fight. So let's do you guys wanna talk about something? Is there some guy? Acha, Dante is saying hum garajte nahi baraste. Usually for the past 2 days when we're doing these streams, there are a lot of people that are coming in and they're really like commenting in the stream, and we're responding to them. But today it seems like there's not so many people that are on the stream. But whoever is watching, feel free to comment on the live stream. So what do I want to show you guys? Yes, I want to show you this guy, Armstrong. India, Pakistan. So this guy is a very interesting guy. I don't know. Let me just quickly search it over here. So sorry, we're not that prepared today, but I'm going to show you this guy who is commenting about the Indian-Pakistan situation, and it's very interesting. All right, for some reason we can't see him. But this guy is really like, these days, he's pushing the agenda that Pakistan and in the war between Pakistan and India, Pakistan has totally lost, and we are a nation जिसने सिर्फ हम लोग जो ना भड़के मारे हैं and false information हम दे रहे हैं, हमारे सारा कुछ तबाह हो गया, and then we come out on the news and say कि हमारा तो सारा कुछ सही है, इंडिया का सारा कुछ तबाह हो गया है. And I don't know, this guy I really liked. He's like an American person who is getting more streams than iShow Speed and all these big YouTubers. And now for the past like 3-4 days, I guess he's getting a lot of viewers from India because India is a bigger nation. Now this guy is making every video in which he's disproving Pakistan. And we like this guy, but now the point still remains that you don't have to be that one-sided. Even if you're getting some views and getting some traction when you're saying things against Pakistan, and this guy is like totally against everything that we are saying. And let me just open the live stream as well so I can see if there's any comments that are going on. Guys, so what do we want to do today? Yes, we also want to talk about what is happening in the Palestine and Gaza Valley situation, because that is a situation that I feel is also very important these days. What is happening is Donald Trump has just made like $1 trillion of trade deals with India, with Qatar, with Saudi Arabia. And what is Saudi Arabia saying? Saudi Arabia is saying that I will only do these deals with you, do these investments with you, if you are willing to
you're willing to accept Palestine as an independent state. And that is a very important point, guys. Now, Donald Trump, in his last tweet, has said that Palestine is another state, West Bank is an independent state. And this is truly, really big, because after the war ended between Israel and the Muslim nations, Israel obviously won, and since then they have illegally occupied all this area. And although Palestine is there's patches of areas in which these people are treated like third-class citizens, and it's total apartheid in this area. But the point is that although Palestine was an independent state, now it is not. Everything that comes through the borders, जो कि वेस्ट बैंक या गाज़ा में जा रही है, वो सारी इजराइल ने कंट्रोल की हुई है. And the most horrendous thing that we have seen, I mean, it's truly horrendous. The people are coming out saying, Israeli army people are saying that we are starving the children in Gaza on purpose. Now, how does that make sense in any freaking situation? I mean, हम लोग videos देख रहे थे and they were very disturbing. I can't show you those videos, but बच्चे जो है ना, उनकी हड्डियाँ निकल आई हैं गज़ा के अंदर. इतना उनको 6 महीने, साल, 2 साल जब से जंग लगी हुई है, वहाँ प्रॉपर खाना नहीं पहुँच पा रहा. जो भी एड कोई कंट्री उनको देना चाहता है, हालांकि मुसलमान नेशंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड उनको देना चाहते हैं, मगर देयर इज़ नो वे दैट द एड कैन कम इन, एंड people are really starving. And so Trump accepting Palestine as an independent state, and if they can make their own decisions, which I think a lot of things that the circumstances of this region is that the war has been going on for so long, and that atrocities and the crimes against humanity are so humongous that if Palestine would become an independent state, that would be such a big victory. I mean, we're willing to accept Israel, but on a fair standard. I think Yasser Arafat ke time pe bhi they were going to do a deal, but at the end, right at the end, the deal was somehow derailed by Israel, or also Clinton was involved in that deal. So wait a second, let me just open the live stream and see if there are any people. मेरा दूसरा फ़ोन पकड़ा सकते हो? हेलो, लाइव स्ट्रीम चल रही है मेरी, चल रही है. ओके, so hold on a second, guys. So guys, do you have a suggestion? Do you want us to talk about something on this live stream? Do let us know in the comments below. And 5 people are watching, 4 people are watching.
And we have Rana Adnan. There are some people in Pakistan who do so much aerial firing at their own wedding. So much that grooms end up getting arrested and the guys are messing with it. ये meme शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले चलाई भी थी in the start of the stream कि there are people are saying कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो अपनी शादी पर ही फायरिंग कर 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 दूल्हे को अरेस्ट करा देती है. तो ये हिंदू कहाँ घुस गए इनको जो है. अच्छा, नाउ अस्मा मुनीर इज सेइंग राना दान शादी पर फायरिंग सिर्फ खुशी में होती है लेकिन दुश्मन पे चलती है सीधा टारगेट पे और वहाँ बेल का ऑप्शन भी नहीं होता. मोदी जी आपके लिए मैसेज है. ये शादी में तो हम खुशी की फायरिंग करते हैं मगर जब हमें दुश्मन मिलता है तो हम सीधा निशाना लेते हैं. मोदी जी घुस के मारेंगे. मोदी अगर जंग करने का इतना ही शौक है तो मैं so that was a nice comment by Israr, but yeah, हम लोग जो है हम लोग वैसे बड़े खुश हैं और इस चीज़ पर हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग फुल स्केल नहीं हुई. हालांकि हम लोग को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि यार कुछ तो 2-4 तो बम फटते. ये तो बिल्कुल ही कुछ घंटे की हुई और ख़त्म हो गई. लोग डिसअपॉइंट हो गए पाकिस्तानी. तो बट वी शुड बी रियली थैंकफुल कि जंग एंड हो गई. एंड चाइना बहुत खुश है कि ये जंग के अंदर, क्योंकि चाइना को अपने वेपन्स इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था. किसके ख़िलाफ़ वो जंग करता, किसको बताता कि मेरे जो मिज़ाइल्स हैं और मेरे जो फाइटर जेट हैं वो बहुत अच्छे हैं. तो इस जंग के अंदर चाइना को ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि उसके सारे वेपन सिस्टम टेस्ट हो गए हैं. और अब चाइना कह रहा है कि हमें तो ताइवान पूरा इन्वेड करने में आधा घंटा लगेगा क्योंकि हमारे जैमिंग सिस्टम जो हमने भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल किए वो सारे जहाज़ों को जैम कर देते हैं, सारे ड्रोन्स को बंद कर देते हैं, सारी चीज़ की सर्वेलेंस. उनके पास सर्वेलेंस डिवाइसेस चाइना की इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह से. चाइनीज़ लोगों ने मेहनत भी बहुत की है अपनी ज़िंदगी में, मगर उनकी सर्वेलेंस डिवाइसेस इतनी अच्छी हैं कि वो चीज़ों को जैसे ही कोई चीज़ अपने एयरपोर्ट से कोई भी जहाज़ उड़ता है तो चाइना के रेडार्स के अंदर वो पहले से ही आ जाता है. एंड नॉट ओनली दैट, जो कि जहाज़ के सेंसर्स हैं उनके अंदर भी डेटा वो मैनिपुलेट करना उन्होंने शुरू कर दिया. सो दीज आर बिग थिंग्स दैट चाइना इज़ नाउ कॉन्फिडेंट. एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, चाइना और रशिया जो है वो आपस में इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं. थोड़ा बहुत इनका जो है टसल्स चलती रहती हैं, उनका थोड़ा बहुत मसले मसाइल चलते रहते हैं, मगर इस जंग के अंदर चाइना ने ये भी प्रूव कर दिया है कि वो रशिया से बेहतर उनके सिस्टम्स हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर बिग विन फ्रॉम द चाइनीज साइड. और मेजर गौरव कह रहा था इनका तो कुछ चलता नहीं है, इनका मसला नहीं है, ये चाइना से इन लोगों ने 2 नंबर संभाल लिए. बट नाउ द वर्ल्ड नोज. और ये हमारे सबके जहन में एक हमेशा से ये बैठा रहा है कि चाइना की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही 2 नंबर हैं और चाइना की चीज़ें बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड चीज़ें चाइना देता है. So now these illusions are actually broken and we are moving towards a brighter, a better future. A better future indeed. And what do I want to talk about is also कि ट्रम्प को अगर कश्मीर का मसला ट्रम्प कैसे सॉल्व कराएगा. वैसे ऑनेस्टली ये भी बात कभी आप लोगों ने सोची है हमारे इंडियन लोगों ने कि ट्रम्प के पास ये राइट कहाँ से आया जंग ख़त्म करवाने का. इंडिया का तो बड़ा मोमेंटम बना हुआ था, इंडिया तो घुस गया था पाकिस्तान में और इंडिया ने कुछ डिसाइसिव करके दिखाना था, मगर एकदम से सीज़ फायर और वो भी ट्रम्प के मुंह से. पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं आकर कहा कि हमने सीज़ फायर करना है
या इंडियंस ने क्यों नहीं आके कहा कि हमने सीज़फायर करना है, जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एकदम से आके, और जेडी वैंस ने एकदम से आके खुद इस चीज़ का क्रेडिट कैसे ले लिया? I mean कि I only see one loser in this whole scenario. Even when the war ended, Trump comes up, और Trump जो है इस चीज़ का इतना क्रेडिट ले रहा है कि न्यूक्लियर जो जंग थी उसको मैंने रुकवा दिया, और न्यूक्लियर जो है millions of people would have died if it wasn't for me. I deserve my Nobel Peace Prize. So why is Donald Trump, even when the war ended and the ceasefire came up, and you could say कि nor Pakistan won and nor India won, but who the hell is Trump, Major Gaurav, who is dictating what you guys are doing? Trump कैसे आगे कह सकता है कि ceasefire end हो गया है या ceasefire हो गया है, जंग ख़त्म हो गई है? ये जो है ना बड़ा मोदी जी के अगेंस्ट अब ये सारी बातें चल रही हैं कि अगर जंग स्टार्ट कर ही दी थी तो कुछ डिसाइसिव बात तो करते ना। अगर जंग शुरू हो गई थी तो मोदी जी को एटलीस्ट दुनिया को ये तो दिखाना चाहिए था कि इंडिया के अंदर शक्ति है पाकिस्तान को अटैक करने की। इंडिया पाकिस्तान के जो है अंदर घुस के पाकिस्तान को मार सकता है। इंडिया कराची पोर्ट को तबाह कर सकता है। इंडिया इस्लामाबाद के अंदर घुस सकता है, आसिम मुनीर पे कू करा सकता है। मगर ये सारी बातें आई एम सैड टू से कि फ्रॉम द इंडियन साइड इट सीम्स लाइक इट वाज अ प्रीमैच्योर scene that when the war started and things really got escalating and things could have turned in India's favor, right at that moment Modi just ended the war and announced a ceasefire. Actually Trump did, but Modi was truly accepting everything that Trump was saying. So that's where this video that this guy what's the name, Dhruv Rat, this YouTuber who's a young YouTuber. We like this guy. He's making good videos. He's very famous with around 7 million subscribers all over India. And this guy comes up with no evidence. पता नहीं उसने कोई डॉन न्यूज़ का आर्टिकल भी लगाया है या पता नहीं किस चीज़ का आर्टिकल लगाया है, मगर he comes up with this ridiculous, हाँ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यंग लड़का है, अच्छी उसकी रिसर्च अच्छी है मानते हैं, मगर उसकी रिसर्च इतनी अच्छी है कि विदाउट एनी प्रूफ उसने कहा मोदी जी जब डिसाइसिव जंग जीतने की पोजीशन में पहुंच गए थे तो मोदी ने जंग इसलिए रोकी क्योंकि पाकिस्तान के शहर सरगोदा के अंदर एक स्ट्राइक हुई जो कि न्यूक्लियर बंकर के सीधा दरवाजे के अंदर घुस के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को तबाह कर दिया, और एक ज़लज़ला आया पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का। तो ये ज़लज़ले की भी खबर वैसे मुझे नहीं पता कि कितनी सच है। कुछ लोग, वैसे मैं सुन रहा था जब ये जंग चल रही थी कि जो है कोई ज़लज़ला आया है, मगर हमें कोई ऐसी बात का बिल्कुल सिर बकवास। और फिर पलकी शर्मा, आप लोगों की पलकी शर्मा, उसकी ये कॉन्स्पिरेसी कि उसने आके टेलीविज़न पे सीधा बोला कि न्यूक्लियर बेस को हम लोगों ने हिट किया है और वहाँ से जो है न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही है, और उनका अपना कुछ सरगोदा के पास शहर है, वो कह रही है कि वहाँ तक न्यूक्लियर रेडिएशन पहुँच गई है। सो लेट्स गो टू अ फ्यू कमेंट्स. Trump most welcome the Qatari girls. That's a great comment from Nottingham Auto Recovery. Yes, Qatari girls and Qatari jets. Trump says so the reporter goes and asks Donald Trump, why did you take like this plane from Qatar? And he's like, they were offering it for free. So I want free things for America. And Trump goes on saying that the jet Air Force One that America is already using is like
around 40 years old, and the maintenance cost on that jet is like astronomical. And these people, Americans, I mean, sometimes when you look at them, आपको ऐसा लगता है कि उनका infrastructure जो है ना थोड़ा सा weak है. 40 साल पुराना Air Force One, it used to be in all the Hollywood movies and every place, and it used to have the best technology, and now they have the same plane after 40 years. Are you kidding me? They're like spending trillions and trillions of dollars on war, and they can't get a new private jet for their president. Thank you, Qatar, for lending a private jet to Donald Trump, and he seemed very happy, actually, by this gesture from Qatar. And another thing that Palki Sharma was saying, I don't know, I don't have the video of that right now, but this is a really interesting fact that Palki was saying, and she was saying that why is America boosting its power so much? Why is America saying that India के राफेल जेट नीचे गिर गए और पाकिस्तान जैसी छोटी मोटी कंट्री से कंपैरिजन वो कह रही थी कि पाकिस्तान जैसी एक टेररिस्ट नेशन से, आतंकियों के शहर से हिंदुस्तान को कैसे इतना बड़ा डिफीट बड़ा मिला, हालांकि हिंदुस्तान की तो मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्रीज में आती है. तो पलकी शर्मा वाज मेकिंग दिस एनालॉजी के रिसेंटली यमन के जो कि सबसे सस्ते वाले रॉकेट हैं, वो जब F-35 फाइटर जेट अमेरिका का सबसे 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, उसके ऊपर जब वो जाके मारते हैं यमनी अपनी बोटों से या बहुत दूर से कहीं से मारते हैं, तो उनका एक्चुअली एक जहाज़ F-35 यमन के रॉकेट्स और मिसाइल्स की वजह से गिरा है. हाउ स्ट्रेंज इज़ दैट. और फिर एक और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि जब शिप टर्न हो रही होती है और ऊपर से जहाज़ लैंड हो रहा होता है, तो उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई मैल फंक्शन है कि वो जहाज़ लैंड होते होते स्लिप हो जाते हैं. तो दो उनके F-35 बहे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब उनकी शिप मुड़ी थी एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो 2 जेट लैंड हुए, एक पहले हुआ एक बाद में, वो दोनों स्लिप होके पानी के अंदर सीधा बिकॉज दीज गाइज are so superior in technology. Actually, it's all just a myth. Europe, Jimmy Dore, I want to open up some of the recent videos that Jimmy Dore did. And Jimmy Dore ki videos ke upar Kashif Raza is saying something. We'll come to that. Jimmy Dore ki video ke andar they're showing really he's telling ke Europe is also on its final leg, and Europe really needs to transform themselves and the way they are and the way they think of themselves. They need a very big socio-economical change for Europe to survive like it does right now. Because if you think of Europe, Europe is made of different countries, and all of these countries have their own language, which is unique, and no one understands these languages outside their own borders. Someone is speaking German, someone is speaking Dutch, someone is speaking Italian. I mean, there is a lot of countries, and how have all these countries come together under Europe? While all these countries have their own interest and they're going their separate ways. And now they're saying कि पोलिश कहते हैं कि हम लोगों को आर्मी रखने का शौक़ नहीं है, स्वीडन कहते हैं हम लोगों को आर्मी रखने का शौक़ नहीं है, जर्मनी कहते हैं वी डोंट वांट टू कीप, जर्मनी को एक्चुअली बैन किया हुआ है क्योंकि जर्मन्स को जब भी आर्मी बनाने का मौका मिला है तो उन्होंने जंग अजीम स्टार्ट किया, उन्होंने पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया. तो एनीवेज the point is that the European countries, some of them are spending like only 2% of their GDP on defending themselves, and they rely on America to protect them from any foreign invaders. So in
after the World War II ended, America was in a very different state. America had like 80% of Americans, 80% of the manufacturing that was happening in the whole wide world was American goods. And America was the only country that was left standing after the World War. They didn't get into the war till the end. And they're so far away that they weren't attacked that much. And all their industries and all the gold also flowed towards America at the World War II time. So America was at a pretty good spot, and America was a fortress that could even protect Canada, even protect Europe. There was NATO and all these extravagant things. Now, America, with the current financial situation and the debt crisis and everything that is going on wrong, with the cities being decimated, fentanyl being distributed freely amongst the younger generation. So America is now not in the same state that it was. And America, Donald Trump, especially Donald Trump, is like Franker D. Roosevelt. Yeah, I don't know if I'm mispronouncing the name. He's like that. He comes at a time when there's a great disruption, there's a change happening in the world. The old system is dying, and then there's a new system that is coming up. And the point is that Donald Trump is the sort of president who's going to get himself out of the European thing, out of Canada. And he wants, if Europe wants to stay together, then Europe should build its own army. And honestly, UK, British, Dutch, इन लोगों का कोई छोटे-छोटे ये islands हैं, मगर इन लोगों का कोई अच्छा track record नहीं है. Whenever Europe is in this sort of a position, Europe goes in a big war. That's the history of Europe. And what is the war that is going to happen in the next 5 years if Europe is like going down and getting decimated? That is the fight between Asia and Europe. पहले तो उन्होंने जंग करके हमारे पर काफ़ी अरसे राज किया, मगर now this is high time that the Europeans take this to their heart and soul. That they need to change how they view themselves. Either get separated, there's not a Europe anymore, or change the way that they're doing their business. At least जो सारे European countries हैं उनके goals तो एक तरफ होना. Everyone's going their separate ways. No one wants to spend on the defense budget. Recently, we hear that Germany and France, and they're spending like $1 trillion to make their own military. But I'm not so sure that they are in such a good financial situation, because remember that America can be good. America can be prosperous because America does have like a big middle class. America is happy with trading with itself. वो अमेरिका में goods बनाए और वो अमेरिका में बेच दे. And that's because after the World War II, America really had a lot of manufacturing. And manufacturing, there's plus sides. They were the highest exporters. There's a plus side and there's a negative side to that. What the negative side of exporting a lot of goods from your country to another is during a time of crisis, when Europe stops wanting things. In the 1920s, there was World War I, and all these American goods were being sold in Europe. And as soon as Europe stopped wanting these goods, the World War II started, and Europe, didn't have that much power, and they were spending everything on the war, and everyone was dying. So Europe did not have the right mentality, and they didn't have the power
to really buy those American goods. That's why the crash in the 1920s in America happened. The Great Depression happened. I think it was 1928, and it was such a big devastation for the American people that they really had to ration their food. And the historians that have written the history of that era say that at that time people really had to think कि उन्होंने डबल रोटी खानी है, अगर एक टाइम की सुबह डबल रोटी मिल गई तो रात को दलिया खा लें. Things like that. I mean, it was a really tough time. They really had to they couldn't buy a proper meal for their kids, for their family. They couldn't eat like 2 times a day. Things were so bad in the Great Depression. And after the World War II, even in the 1970s with the oil embargo, United States understood that manufacturing is good, but exporting a lot of stuff to other countries has its plus points, but it also has its negative points. And that's why Europe now, and the way things are going with China and Russia and Canada, Europe and Canada really need to realize that if they're saying that they're not part of America, then they have to act like that. Because even if you look at Canada, Canada is taking so much aid from America and so much help from America, and all their defense is being held by America. If everyone knows, if you attack Canada, America is going to come and save Canada. That's why they don't even make an army. And times are now changing. These countries that were helped by the Americans there's no way now that America is going to continue on helping them. So Kashif Raza says, Chaudhry Trump ने सारा प्लान ख़राब कर दिया. हमारे जो का प्लान था गोवा के बीचेस पे जाके पार्टी करने का, हमें जो सामान भी बांध लिया था, पर अफसोस अब वापस आना फ्लैट पे. हमने तो मोदी जी से चाय पीनी है. हमने तो जब हम इंडिया में हमने दिल्ली में घुसना था तो हमने मोदी जी को वापस चाय के स्टॉल पे खड़ा करना था, जिसके ऊपर मोदी जी बचपन में खड़ा किए होते थे, क्योंकि हमें पता है कि मोदी जी चाय बहुत अच्छी बनाते हैं. और हमने आपकी शिवरानी पत्नी क्या नाम है नहीं पायलट का नाम शिवानी जी को जो हमने आपकी चाय पिलाई, वो चाय भी बहुत फैंटास्टिक थी. तो इस वजह से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्लान्स काफ़ी चिकनाचूर हुए हैं. हमने घुसना भी था और हमने गोवा भी देखना था, हमने कैटरीना कैफ को भी मिलना था, मगर हमारे सारे जो है ख्वाब चिकनाचूर कर दिए मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी जंग का मोमेंटम नहीं संभाल पाए. जंग शुरू होने से पहले ही मोदी जी ने कह दिया प्लीज़ 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 माफ़ कर दे हमें. Sir, which Muslim country is that instead of helping Palestine is giving a jet as a gift to Trump? What is the matter? Rana Adnan, that is a very interesting point that you highlighted today. And Trump, Qatar जो है वो, I mean, they've been harboring, it's a very sensitive topic, what Muslim nations are doing towards the Palestine cause. Because we see that the Yemenis and the Iranians are more effective in the battle against the Jews or the Israelis or the Zionists. Zionism is actually, if you really think about Zionism, it's actually not even Judaism. But Israel has been taken over by Zionism. How strange is that? And it's not just a day or two. It's like the past 70 odd years that Israel has been taken by this radical leftist Zionist movement. And
I was watching this video, a very interesting video. There's this lady who was a Jew and who was an Israeli loving Jew, and it took her just one time she went to Israel, and she saw how they were treating the Palestinian people, and it was such a bad experience. And she saw apartheid firsthand. She saw apartheid through her eyes, and when she came back, she was the biggest critic of Zionism and of the Israeli state. Even Jews themselves don't like Zionism and how the Israeli state is functioning, keeping all these millions of Muslims, treating them like animals in a cage, and putting like checks and putting like border walls against the communities, and really destroying the way they want to drag these Muslims to, I don't know, where will these Muslims go? To the river? They'll just float on the river? That's what the Jews think. Where will they actually go? And that is just a sad reality. And Qatar, Saudi Arabia, sometimes they are on Israel's side and they're fighting a war against Yemen, against even Turkey, and all these Muslim nations. It's sad to say that sometimes they're on the wrong side. They're protecting the side of the evil, and they're on the side of their staunch enemies. But this recent news that we're hearing is कि जो फ़लस्तीन और कतर का सारा मामला हुआ है, Saudi Arabia ने कहा है कि the only way that we're going to accept Israel is that Israel accepts Palestine. And that's a fair negotiation deal that we as Muslims have thrown to the Israeli people since like I don't know what. Before the 67 war, we wanted the whole place for ourselves. We wanted no Jews. But after the 67 war, we just want the land that we had before 67, because most of the land was with the Muslims, and there was a little bit of land with the Jews. And it's such a wild thing that only 6 million Jews, if you think about it really, 6 million Jews have scared 2 billion Muslims because of how ruthless and how evil the Zionist agenda is. Rana Adnan keh raha hai, sir, which Muslim country is that? Acha, ye to hai. Nottingham Water Recovery is saying the Illuminati group come in Pakistan or not. I saw the video of Illuminati come in Lahore. So yeah, it's the Rothschilds are everywhere, and the Illuminatis are all. The point being that if I would say that there was a billionaire, a group of billionaires who were involved in satanic rituals and pedophilia, and they were friends with the biggest presidents of the biggest nations, would you believe in me if I said that the same person, this mega multi-billionaire who has like a cult and has demonic rituals, he's doing demonic rituals, and he's a pedophile, and he has a pedophile ring that is getting underage girls from Europe, from Asia, from everywhere in the world, and they're going towards an island. And at this island, the president of the United States, Mr. Clinton, has gone there like 27 times. Now, that is like a big claim, a big claim, because
what I mean is, this really happened in life. This story is real because now we know that Epstein is a guy who did all these things, and Clinton flew like 27 times. There's also some evidence that Clinton was in the pool with some underage girls and Jeffrey Epstein was right next to them. And I mean, this all is like beyond belief. And there's some guy that I was listening to on the internet was saying that most of the people in the world are good people, and there is like only a small amount of people that are bad and who actually think bad about the world and who actually want to do something nefarious and destroy other people and destroy livelihood and destroy nations and destroy this and that. But the problem is that the people who believe in God don't really believe in God. They're just like passively believing in God. They're not even going to the church or the mosque or even like actively doing good deeds. But all these small number of bad people are really hell-bent, and they're adamant in their belief, and they really do think that there's an evil power, there's a Satan, and they do rituals for that Satan, and they also, that is a big conspiracy that the moment that they wake up every morning, they are willing to sacrifice their own lives, their own livelihoods. These ultra rich people who have this cult, and they're spending like millions and millions of dollars just to destroy the world. While on the other side, all these good people, all these amazing people that are all over the world, they're never even thinking about spending a penny towards something good. And that's the sad reality of the world. So, भाई ट्रम्प जेट ले गया और हम अब तक पैलेस्टाइन के लिए दुआ भेज रहे हैं. प्रायोरिटीज़ का सीन ही अलग है. Dante, but it's really hard to find out where exactly, because it's an invite-only group. They're talking about the Illuminatis. Yes, you got a point, Dante. अगर ट्रंप ने मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड के लिए कुछ नहीं किया तो उसको जेट गिफ्ट करने की रीजनिंग क्या है? कुछ तो हुआ है. You're right, Asma. There's something that is happening. क्या एक लग्जरी गिफ्ट से उन लोगों का दर्द कम हो सकता है जो पैलेस्टाइन में हर रोज शहीद हो रहे हैं? Oh my. Yes, Qatar, you have given Trump a jet, and Trump is very happy. But have you given something to the Palestinian people and how they're suffering, and how Israel is just laughing on the misery of these people? Have you done something substantial? I mean, you might have done something under the table, but we don't see Qatar or Saudi Arabia really defending Palestine like they defend the Iranians and the Yemenis defend the Palestine cause. So the black powers come into Qatar, I think. These Qataris are very rich and very prosperous, and Dubai is also very prosperous, and these countries, they're getting too westernized too fast. The people are drinking over there, there are clubs, there's prostitution over there. The buildings and the infrastructure is being inspired by something that is, I don't know. Do we want to talk about this? Maybe that's, I'll talk about that in just a second. Let me read out the comments. The black power is coming to Qatar. Qatar में power तो है, लेकिन वो economically और diplomacy वाले हैं. That's a great point, Asma. And अच्छा, it's been an hour. कितना टाइम हुआ है हमारी लाइव स्ट्रीम को?
1 hour and 15 minutes. Wow, that's like a long time. So to end this, what I do think today is कि हमारा जो है ना thumbnail जो है ना वो भी आज सही नहीं था. I guess that's why there's not a lot of people coming, because हमारा thumbnail जो है ना वो उसके ऊपर मेरी शक्ल होनी चाहिए थी और लाइव का बटन लगा होना चाहिए था. वो ऐसे लग रहा है ना कि लाइव है ही नहीं. हाँ, लाइव आ रहा होगा कहीं ना कहीं लोगों के यूट्यूब फीड्स में, या हमारे हिंदू भाई हार मान चुके हैं. उन्होंने देखा न्यूक्लियर फेक डिज़ास्टर, मोदी की शक्ल, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्ट्रीम को नहीं ज्वाइन करना. उन्होंने इतनी हार, इतनी ह्यूमिलिएशन इंटरनेशनली फेस कर ली है कि आज हमारा एक भी हिंदू भाई हमारे साथ नहीं है. अच्छा, तो what was I about to say? I was about to say, finally end this live stream today on a positive, not a positive note, on a story about that I heard from Tucker Carlson and Alex Jones, who are like the enemies of the liberal leftist. They're saying that all these big scientists and all these big world leaders, they don't believe in what is Darwinism. Yeah, I forgot the word Darwinism. Hold on for a second. The lift does some disturbance with our microphone. Yeah, we're all good. So yeah, so all these elite people all around the world don't believe in Darwinism. They don't believe कि एक मछली, sorry for the disruption. I'll just continue in a second. I think there's someone coming to our office. कोई आए? अस्सलाम वालेकुम राफे, क्या हाल है? I'll be ending my live stream, but with this final notice. Sorry for the disruption that we had earlier. So I was talking about what I heard from Alex Jones and Tucker Carlson, and all these elite people all around the world, they don't believe in Darwinism, and they don't believe that there was like a fish, there was like a lizard that went into the sea and became a fish, and the fish came back into the land and it became an alligator, and the alligator went back into the ocean and it became like a mammal, a dolphin, and the dolphin came back on the land and it became a monkey, and the monkey somehow became a human. So there's a lot of gaps in Darwinism, I'm sorry to say. And all these elite people don't really believe that we are here through natural selection or some sort of a weird mishap that happened. We're here in this world and through all the literature. Oh my God. The lift is okay? The lift is okay? Yeah, the lift is okay. And throughout history, when we look at the Mayans, when we look at the Egyptians, they have been doing these weird rituals in which they go to the top of a pyramid and they make a human sacrifice. And through all this research and through these ancient texts that these elites have access to, they know that the world they live around, the reality that they see, is not the whole reality. The world, as you know, is like 90-something% or 95% of the universe, we don't know where it is. We say that it's some sort of a dark matter. But the point is that we live in a type of reality
that is almost, what could you say, is interacting with the spectrum of things that we can see, that we can observe, and that we can notice is very small. If you really could see what is around you, what is around in the universe, you might see a lot of things. Even in this room, there might be like 50 different type of consciousness existing right in this room, and we can't really see or hear or interact with them. And these Zionists, what they do is that the Zionists go do ayahuasca, which is a brew which has a very interesting history because it was invented by the Mayans. But the chemical formulation to make ayahuasca is so difficult that you have to take some part of a plant from one side of the forest and another part of the plant from another forest, and then you have to mix it together. So when it goes into your stomach, it dissolves the proper way and it releases DMT. And DMT is something that is in our brains, but there's an excess of DMT that is released, and that gives you like a spiritual experience. If you like are doing DMT in like a regular place, you'll only see these little NPC type of characters who will come to you and talk to you about your life and everything and your goals and show you your death. But that's nothing compared to what these elite people are doing, because they're taking these hallucinogenics like DMT and some other stuff, and they're going to these places where there have been mass sacrifices, and there have been graves, and there have been burial places that are like thousands and thousands of years old, and there have been children who have been sacrificed over there. So they go and they take like this drug, and then they see like a 40-foot monster coming from the forest. And this monster is so big, and then this monster comes up to them, and it starts telling them some information, some knowledge about the world, and how did we invent the computer, the semiconductor, and the aeroplane, and all this technology just came in like 30, 40 years. It's because some other entity was telling these humans the secrets and the codes. And then after like telling like a few minutes of this entity conversing with the humans, it stops. And it tells you that it needs like a sacrifice. And what sort of a sacrifice does it want? It wants you to sacrifice your own younger generation. Because what is more sacred to humanity than our own children? Our own children are the most important sort of people thing that humanity, because if there was no children for the next 70, 80 years, humanity would cease to exist. And this evil entity wants us to make a sacrifice of a young kid or a child, and it's been going on. The Mayans believed that when they did these rituals and these sacrifices, they would get immense powers, and it's written in the text. And that's sadly what these elites are also thinking. So with that, it was like a wonderful time I had with you guys. I don't know, we didn't get a lot of traction today. We didn't get a lot of people in our live stream like we usually do. Since our last two streams, we were really happy. But we'll try to change the thumbnail, and we'll try to be... I think today was a day when I also had... my energy was also a little bit low. But we'll be back, and we'll be back with a few good jokes the next time we're here. And we love you all. We care about you. Either you're from Pakistan, India, from America, from Canada, from anywhere, we love you the same. And it's such a nice time I have on all these live streams, and I'm hoping to do these more often. And yeah, any topic that anyone feels like,
they want me to discuss about, they can just come in the live comments and we'll display the comment and I'll read it out loud and then I'll answer that comment as well. So with that, guys, thank you so much. I hope you have a wonderful night. I hope you sleep well. Bye-bye. Peace out.